स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन बीम ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया है दैट इज इन लेक्चर 21। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन बीम के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डिराइव की है, और जो हमने इक्वेशन डिराइव की है उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लेक्चर 21 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप यहीं पॉज कर दीजिए और लेक्चर 21 को आप एक बार देख लीजिए, ताकि आप ये समझ सकें कि जो इक्वेशन को हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन कहाँ से आई है, कहाँ से डिराइव हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में इसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसा कि हमने लेक्चर 21 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस में स्टडी किया है कि बीम के किसी फाइबर ईएफ पर जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस की दूरी पर है और जिसकी थिकनेस है डी वाई और विड्थ है बी, उस पर हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू होगी टाउ इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स 1/IB इंटीग्रेशन ऑफ बी वाई डी वाई फ्रॉम वाई टू एच बाई टू। सो हियर इन दिस फिगर दिस इज द फाइबर ईएफ जिसकी लेंथ है डेल एक्स, thickness है b that we can see in the area of cross section, and it is lying at a distance of y from the neutral axis, which is shown by the blue line. So this is the general equation which is giving us the value of horizontal shear stress in such a case. Now here we know that this del m by del x, or we can say this is the differentiation of movement with respect to x, it will be equal to force. So here this is the shear force at the section. So we are putting this value of del m by del x equal to f in this given equation. We will get tau equal to f upon IB integration of by dy from y to h by 2. Let us say this is equation number b. Now this is the generalized equation. ये equation हमने derive की थी. Now we will use this equation, that is equation b, for our derivation of the cases of rectangular and circular cross section. तो अब हम इसी equation को further use करेंगे. So let us find out the horizontal shear stress in beam of rectangular cross section. For that, consider a beam of rectangular cross section of width L and depth h. हम एक बीम कंसीडर करते हैं जिसकी क्रॉस सेक्शन की विड्थ है L और डेप्थ है h, and F is the shear force at the cross section that has been considered. So this is the figure. यहाँ पर हम देख सकते हैं this is the cross section of the beam which is rectangular in shape. इसकी width है b और height है h by 2 plus h by 2, that is h. ना हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने बीम में एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस की दूरी पर है. सो दिस इज द एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हियर. लेट अस से दिस इज द एलिमेंट्री स्ट्रिप. इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है y एंड थिकनेस है इसकी dy एंड विड्थ विल बी b. देन एज पर इक्वेशन b जो कि जनरलाइज्ड इक्वेशन है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप पर हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू होगी tau equal to f upon IB integration of by dy from y to h by 2. Now integrating it further, we will get f upon I y square by 2, because b will be cancelled out with this b, that is the constant values, and integration of y, that is y square by 2. So this is y square by 2 and limit is from y to h by 2. Further simplifying it, we are taking out 2 because this is the constant. तो इस constant 2 को हमने बाहर ले लिया. So f upon 2i y square from y to h by 2, these are the limits. Now putting these value of h by 2 and y, we will get tau equal to f upon 2i h square by 4 minus y square. Now putting value of moment of inertia I. So now we know moment of inertia for the rectangular cross section about its neutral axis will be bh cube by 12. So putting this value in this equation of tau, we will get tau equal to f into 12 by 2 into bh cube h square by 4 minus y square. Since rectangular cross section के लिए I कितना होगा bh cube by 12 that we have just discussed. So now simplifying it further, horizontal shear stress in beam of rectangular cross section will be
टाउ इक्वल टू 6f बाई बी एच क्यूब एच स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वो इक्वेशन है जो हमें हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस की वैल्यू देती है इन द बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। नाउ लेट अस से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. This represents the equation of parabola because here this is minus y square. So this is the format of parabolic equation. It means rectangular cross section में जो distribution of horizontal shear stress है that is parabolic in nature, that we can see in this diagram. So here this is the rectangular cross section and here this is the line of parabolic curve. This we can see, this is the parabolic curve जो हमने यहाँ mark किया है. This is the parabola, this one. This parabolic curve represents the parabolic distribution of horizontal shear stress. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं this is the vertical line that is for the reference and this curve, this is the parabolic curve which is representing the distribution of horizontal shear stress in case of rectangular cross section. Now at y equal to h by 2 means at the top fiber or at the bottom fiber. Putting this value of y equal to h by 2 in equation number 1, we will get tau equal to 6f by bh cube into h square by 4 minus h square by 4, that will be equal to 0. So means at y equal to h by 2 means at the extremes, at the top fiber and at the bottom fiber, दोनों ही जगह पे जो tau की value होगी that will be 0 and this is also visible here. यहाँ पर the tau is 0, here also the tau is 0. And at y equal to 0 means at the midpoint or at the neutral axis, putting this value of y equal to 0 in equation number 1, we will get tau equal to 3 by 2 dot f by bh. Now this is representing the maximum value of shear stress on this rectangular cross section. और ये हम इस diagram में भी देख सकते हैं यहाँ पर. Here you can see this is the portion of maximum shear stress, tau max, जो कि हमने यहाँ पे मार्क भी किया है. So this is lying at the neutral axis. Now we can write that tau max is equal to 3 by 2 of tau mean because f upon bh, ये जो हमने यहाँ पर f upon bh किया है, this is shear force upon bh means area. So force upon area, that is basically the mean shear stress. So it means that tau max will be equal to 3 by 2 of tau mean for the case of rectangular cross section. Now let us find out the value of horizontal shear stress in beam of circular cross section. So for that, let us consider a beam of circular cross section जिसका radius है r and let f is the shear force at the cross section considered. जो हमने cross section consider किया है उस पे shear force की value है f. So this is the figure here. This is the circular cross section of the beam. This is the center point and from here this is the radius r. Now for horizontal shear stress distribution निकालने के लिए बीम में एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं जो कि न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस की दूरी पर है और जिसकी थिकनेस है dy और विड्थ है b, दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम. सो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर किया है. दिस इज द स्ट्रिप जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज y एंड थिकनेस इज dy एंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज b. देन एज पर इक्वेशन b जो कि हमारी प्राइमरी इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल shear stress टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, द एलिमेंट्री स्ट्रिप पर हॉरिजॉन्टल shear stress टाउ की वैल्यू होगी टाउ इक्वल टू f upon ib इंटीग्रेशन ऑफ b by dy from y to h by 2. That was our equation number b. Now from the figure we have y equal to r sin theta. We can easily see here, ये मैंने एक स्लाइड कंस्ट्रक्शन किया है. दिस इज द रेडियस r, यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली. Now this angle is theta, so we can easily find out with the help of geometry that this vertical height, that is y, will be equal to r sin theta and b, that is the width of this strip, this is equal to twice of this distance means r cos theta. R cos theta means from here center point to this point, this is r cos theta and since b is the twice of this distance, so b is equal to 2r cos theta, that we can easily understand. Now let me draw the enlarged view of this particular area so that we can easily calculate. Now आपने यहाँ पर कुछ geometrical construction किया है that we can see in this diagram. This is the strip जो हमने कंसिडर की थी जिसकी thickness है dy. स्ट्रिप की अपर लाइन पे है पॉइंट B एंड लोअर लाइन पे है पॉइंट A ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब मैंने इन दोनों ही पॉइंट्स A और B को सेंटर पॉइंट से मीट किया विद द लाइन AO एंड BO. नाउ angle AOF is theta, angle AOB is d theta, right? Now this dy जो कि हमने कंसीडर की थी, the thickness of this strip is very low. Now since the thickness of this strip is very small, we can say this angle d theta, which is the included angle between the line AO and BO, this d theta is also very small. Now because this d theta is very small,
I can assume that arc AB is now a straight line. क्योंकि ये d थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि AB आर्क, अब ये आर्क ना हो लेके मैं इसे कंसीडर करूंगा नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन AB, जो कि मैंने रेड कलर से मार्क की है. एंड ऑल्सो क्योंकि ये d थीटा बहुत छोटा है, आई कैन से एंगल OBA will be 90 degree. So I am taking this angle to be of 90 degree. Now, angle BDA means this angle BDA will be equal to angle EDO because these are the opposite angles. Now, angle EDO will be equal to angle DOF. This one, DOF. Now, DOF angle कितना है? That is theta plus d theta. Now, again, since d theta is very very small, I am neglecting d theta. मैं इस d theta को neglect कर रहा हूँ. Means angle EDO will be equal to angle AOF will be equal to theta. So when this angle is theta, so these are the opposite angles. So angle BDA will also equal to theta. Now I am drawing a vertical line from the point B. So this is meeting at the point C. So this angle is of 90 degree. Means angle DBC, this will be equal to 90 minus theta. Means angle ABC will be theta. Now we know that length of arc will be equal to radius into tan of included angle. Means length of this arc AB will be equal to R into tan d theta. But again, since d theta is very very small, I can write that tan d theta is equal to d theta. So this will become R d theta. So AB equal to R d theta now. Now considering the triangle ABC, I can say this vertical height BC, which is equal to dy, will be equal to AB cos theta. So मैंने तीनों की वैल्यूज दैट इज y, b एंड dy तीनों की वैल्यू थीटा की टर्म में फाइंड आउट कर ली है. एंड नाउ आई विल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन b फॉर फर्दर कैलकुलेशन. So now putting these values in equation number b, we have tau equal to f upon I into 2r cos theta, integration of 2r cos theta dot r sin theta dot r cos theta dot d theta from theta to pi by 2. That is limit of the integration is theta to pi by 2. So now further simplifying it, that is f upon 2ir cos theta, integration from theta to pi by 2. Now these r, 3 r's are there. So this is 2r cube, cos and cos, this is cos square theta dot sin theta dot d theta. So now taking out the r cube. So this r cube, so cube will be cancelled with this r, so this will become r square. So f r square upon I cos theta, because this 2 will cancel out with this 2. And this will be integration of from theta to pi by 2 cos square theta sin theta d theta. So now integrating it further, we will get f r square by I cos theta, and integration of cos square theta dot sin theta will be cos cube theta by 3, and the limit is from theta to pi by 2. So now taking out 3, which is the constant value, and putting the value of I, that is the moment of inertia, and the moment of inertia for a circular section will be pi d to the power 4 by 64 or pi r to the power 4 by 4. So putting this value, we will get tau equal to 4f r square by pi r square cos theta dot 1 by 3 dot cos cube pi by 2 minus cos cube theta. So here we have put the value of I, and we know that I equal to pi d to the power 4 by 64 or pi r to the power 4 by 4. So मैंने यहाँ value put किया, and finally I got this expression. Now simplifying it further, we will get that horizontal shear stress distribution in beam of circular cross section, यानी कि finally circular cross section के beam में horizontal shear stress की value होगी tau equal to 4f cos square theta by 3 pi r square. So this is the final expression, and this expression is giving us the value of horizontal shear stress in beam of circular cross section. Now this equation is also representing the equation of पैराबोला, और वी कैन से दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक नेचर. ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है ये भी पैराबोलिक इन नेचर है. इसका मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा. दैट वी हैव टू रिमेंबर. दिस इज पैराबोलिक इन नेचर. दिस इज आल्सो वी कैन से दिस इज आल्सो पैराबोलिक इन नेचर. सो जस्ट ड्राइंग अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन. This is the parabolic curve. This is the curve. This is parabolic curve, and this parabolic curve is representing the shear stress distribution, that is the horizontal shear stress distribution. And here also we can find out that at theta equal to 90 degree means at the topmost point. At theta equal to 90 degree कब होगा? At this point.
or at the bottommost point, both. Here, the value of putting the value of theta equal to 90 degree in this expression that we have find out for the case of circular cross section. तो theta equal to 90 degree हम इस expression में put करेंगे and we will get cos 90 that is 0 means theta equal to 0. इसका मतलब at the top fibers or at the bottom fiber the value of horizontal shear stress tau will be equal to 0. तो यहाँ पर दोनों ही ends पे at the top and at the bottom हम दोनों ही ends पे देख सकते हैं कि shear stress की value 0 है. And at theta equal to 0 degree means at the neutral axis we can find out that cos 0 equal to 1. So the value of tau will be tau equal to 4f by 3 pi r square. So this is the horizontal shear stress distribution value at the neutral axis and this is the maximum shear stress. Now we can say that tau max equal to 4 by 3 of tau mean. Tau mean means shear force upon area, that is pi r square. So this is tau mean. So tau max equal to 4 by 3 of tau mean. So my dear friend, आज जो हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये ड्राइवेशन आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा. जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है वो आप समझ गए होंगे. बट फिर भी इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का मैं प्रॉपर रिप्लाई कर सकूं, या फिर आप मुझे मेरे गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक इट. इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे सर्कुलेट करें ताकि बाकी लोग भी इसका प्रॉपर फायदा उठा सकें. थैंक यू.